Okay, students, so let's get started with today's past paper. Today we have to do AS Physics, May June 2025, paper 1, variant 4. This is a 1 hour 15 minutes ka paper. Let's get started with it. Okay. So, initially, let's zoom in a bit. And yeah, see here. The number of atoms in a mobile phone handset can be estimated by using the approximate volume of a handset and dividing it by the volume of an atom. Okay. What is a reasonable estimate for the number of atoms in a mobile phone headset? Okay. So first of all, what is the volume of an atom? बेटा ये चीज आपको estimation की worksheet में I have provided you guys an estimation worksheet where every such quantity is written. What is the volume of an atom approximately? The volume of an atom is approximately 10 raised to the power of minus 24 cm cube. Now, can you make a mobile phone and calculate its volume as well? Yeah. A normal mobile phone looks something like this. A normal mobile phone looks something along this line, basically a 3D cuboid. Okay, this is a normal mobile phone. Basically, it looks something like a 3D cuboid. Let me draw it correctly. Somewhat like this, a 3D cuboid. The length can be assumed to be 10 centimeter. The width can also be assumed to be 10 centimeter. And the thickness can be assumed to be 1 centimeter. Can you calculate the volume of the mobile phone? Can you calculate the volume of the mobile phone? 10 into 10 into 1, that is 100 cm cube. Let's say the approximate volume of a mobile phone is 100 cm cube beta. Approximate volume of an atom is 10 raised to the power of minus 24. Can you calculate the number of atoms? How will you calculate number of atoms, Anji? How will you calculate number of atoms? Any ideas? The examiner has told you you will take the volume of the mobile divided by the volume of atom. Volume of mobile क्या है भाई 100 cm cube. Volume of atom क्या है 10 raised to the power of minus 24. Take it to the top side. 100 into 10 raised to the power of 24 positive. This comes out to be 10 raised to the power of 26. Any answers like that? बेटा हमने यहाँ पे क्या किया है हमने अज्यूम किया है कि एक नॉर्मल मोबाइल की थिकनेस भी 1 सेंटीमीटर होती है लेंथ 10 सेंटीमीटर है ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 100 cm क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एटम वी गेट द नंबर ऑफ एटम okay which unit is not equivalent to the unit of energy अच्छा कौन सा यूनिट बच्चे एनर्जी के यूनिट के इक्विवेलेंट नहीं है ओके लेट्स एनालाइज द फर्स्ट वन इज न्यूटन मीटर ओके बेटा डू यू रिमेंबर वर्क डन दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या आपको ये बात याद है कि वर्क डन एंड एनर्जी लेट मी डू द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन 2 हियर इसको थोड़ा सा अब हम ऊपर ही रख देते हैं यहाँ पे let's put it somewhere here okay. Now let's do the working of question 2 here. Do you remember work done used to be equal to energy? बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स के क्या यूनिट्स ले सकते हो न्यूटन डी के क्या यूनिट्स ले सकते हो मीटर so yeah this could be an unit of energy this is the correct unit of energy let's not mark this one we have to mark a unit that is not equivalent to the unit of energy acha voltage per coulomb beta do you remember this formula voltage is equals to work done over charge multiply charge to the other side voltage into charge is equals to work done that is equals to energy work done और energy same चीज होते हैं वोल्टेज के क्या यूनिट्स होते हैं वी चार्ज के यूनिट्स हैं सी द यूनिट्स ऑफ वर्क डन और एनर्जी कम्स आउट टू बी वी सी दिस इज आल्सो करेक्ट नाउ डू यू रिमेंबर द थर्ड फॉर्मूला रिलेटेड टू वर्क डन या एनर्जी
Power is equals to energy over time. Power into time is equals to energy. पावर का क्या यूनिट होगा? वोट्स. टाइम के क्या यूनिट्स होंगे? सेकंड. एनर्जी के क्या यूनिट्स आगे? वोट्स. सेकंड. सो बेटा ये तीनों यूनिट्स ही एनर्जी के हैं. The only remaining unit that is not of energy is kg ms minus 2. kg ms minus 2 किसका यूनिट है? Force into acceleration. Mass into acceleration. This is a unit of force. kg ms minus 1 is ms minus 2 is a unit of force. Mass की जगह kg, acceleration की जगह ms minus 2. This is a unit of force, not a unit of energy. D is your answer. बाकी सारे यूनिट्स एनर्जी के जस्टिफाइबल हैं. देयर इज नो एरर इन देम. पहला यूनिट किस तरह जस्टिफाइबल है? वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. न्यूटन मीटर आ गया आपका. फर्स्ट यूनिट जस्टिफाई हो गया. सेकंड फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज. वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आ जाएगा. वोल्टेज की यूनिट इज वी, चार्ज की यूनिट इज सी. दिस इज आल्सो जस्टिफाइबल. थर्ड फॉर्मूला कौन सा है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. पावर के क्या यूनिट्स हैं? वोट्स. टाइम के क्या यूनिट्स हैं? सेकंड्स. एनर्जी के यूनिट्स वोट्स, सेकंड्स भी जस्टिफाइबल है. ओनली डी इज नॉट जस्टिफाइड. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Calipers are used to determine the thickness of a wall of glass tube. Okay, so we have to determine the thickness of the walls of the glass tube. The following measurements are made. The internal diameter is 10 plus minus 0.1. External diameter is 12 plus minus 0.1. Okay, so let me zoom in a bit. Let's mark it here. बेटा ये जो आपका एक्सटर्नल डायमीटर है ना, ये पूरी चीज, दिस इज व्हाट? 12. And your internal diameter, that is this thing, is 10. Okay. What do you have to calculate? You have to calculate the thickness of the wall. You have to calculate, let me zoom in. You have to calculate this thickness of the wall. How will you do that? कैसे करोगे? Just focus on the board. बेटा अगर ये पूरी पिंक वाली लेंथ 12 है, राइट? अगर ये पूरा डायमीटर 12 है, what will be half of this length? What will be this? If the entire length is 12, what will be this half length? 6. And if this entire black length is 10, what will be this half from the center? Obviously 5. So if I draw this neatly, again, basically the diameter external is 12. What does the external radius? What does the external radius turn out to be? 6. Somewhat like this. The internal diameter is 10. Can you calculate the internal radius? हाँ जी, internal radius निकाल सकते हो बेटा. Yes. The internal radius is 5. Can you calculate the thickness? हाँ जी. Can you calculate the thickness? Thickness कौन सा एरिया है बच्चे? ये चीज, ये स्मॉल लिटिल चीज. थिकनेस क्या आ जाएगी? 6 minus 5, that is equals to 1 millimeter. So obviously option C और D बेटा क्या हो जाएंगे? Cancel out. C और D options cancel out. You also have to find the uncertainty now. Okay. Now you know internal radius आपने किस तरह निकाला था बेटा? 10 को 5 से डिवाइड कर 10 को 2 से डिवाइड कर दिया. This comes out to 5. What will be the uncertainty in internal radius? Internal radius में uncertainty क्या होगी? 0.1 divided by 2. That comes out to be 0.05. Similarly, external radius आपने external diameter को divide by 2 करके निकाला था. That is 12 divided by 2, that is 6. 0.1 को भी divide by 2 कर दो, that is 0.05. आपके पास internal radius की भी uncertainty आ गई, external radius की भी uncertainty आ गई. Can you calculate the uncertainty in thickness? Yes. Do you remember our rule? Whenever we are adding
और सब्ट्रैक्टिंग, जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज एड अप। जब भी आप एडिशन कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो बच्चे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज एड अप. What is the absolute uncertainty here? 0.05. Here we have 0.05. What will be your uncertainty in this? 0.05 plus 0.05. सर ऐसा क्यों किया आपने? Because thickness निकालने के लिए we were subtracting 5 from 6. 1 plus minus 0.1 millimeter should be your answer. ये is your answer. तो बेटा डू यू अंडरस्टैंड के हमने क्या किया है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल थिकनेस निकालने के लिए यू कैलकुलेटेड द एक्सटर्नल डायमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर किस तरह आएगा? इसको 12 को डिवाइड बाय 2 कर दो. देन यू कैलकुलेटेड द इंटरनल डायमीटर. 10 को डिवाइड बाय 2 कर दो. टू कैलकुलेट द थिकनेस, एक्सटर्नल रेडियस माइनस द इंटरनल रेडियस, 1 millimeter comes out to be your thickness. Then how did you calculated the absolute uncertainty in thickness? Can you realize internal diameter की absolute uncertainty was 0.01. To calculate the uncertainty in internal radius, you divide it by 2. Similarly, external diameter में uncertainty क्या थी? 0.1. To calculate the uncertainty in external radius, you divide it by 2. Add both the uncertainties to get this 0.1 millimeter as your absolute uncertainty in thickness. Let's further move ahead. Okay. The diagram shows two fixed pins. Okay, you have two fixed pins here. Okay, no problems in that. A length of elastic is stretched between y and z and around pin x. Okay, y and z के around आपने stretch किया हुआ है, which is attached to a trolley. X is the center of the elastic and the trolley is to be propelled in the direction of p at right angles to yz. The tension in the elastic is 4 Newton. So the tension in this elastic is 4 Newton, and in this elastic as well you have a tension of 4 Newton. Okay. What do you have to calculate? You have to calculate the force accelerating in the direction of p when the trolley is released. अच्छा जी, आपने direction of p में या horizontal direction में लगने वाली force निकाली. First of all, just sit back and relax. This entire length is 80 millimeter. तो बेटा हाफ लेंथ क्या हो जाएगी? ये लेंथ क्या हो जाएगी? What will this length come out to be? If the entire length is 80 millimeter, this length will be 40 millimeter. This is 50 millimeter. Can you calculate the angle theta here? Can you realize that this is a right angle triangle? This is your perpendicular. This is your hypotenuse. Can you calculate the angle theta? Yes. How will you do that? Sine of theta is equals to perpendicular over hypotenuse. Perpendicular क्या है बच्चे? 40. Hypotenuse क्या है बच्चे? 50. Sine theta. Theta की वैल्यू क्या आ गई? Sine inverse 4/5. मुझे बताओ क्या वैल्यू आती है? Sine inverse 0.8. This comes out to be 53.1 degrees. थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 53.1 degrees. Beta, now you have to calculate the force in the direction of v. तो हम क्या करेंगे? What will we do now? We will resolve these 4 Newton value forces. What will be the horizontal component of the 4 Newton force? 4 cosine theta. What will be the horizontal component of this force? Again 4 cosine theta. What is the value of theta? 53.1. P is equals to 4 cosine theta plus 4 cosine theta. Theta की वैल्यू क्या है? 53.1. 4 cosine 53.1 plus 4 cosine 53.1. Can you calculate this answer? This comes out to be 4.8 newtons. बेटा आपका आंसर आ गया 4.8 newtons. C is your answer. Simple, easy peasy, lemon squeezy, nothing complicated here. Okay, let's see this question. A student cycles uphill from
home to a shop taking 10 minutes. अच्छा जी, स्टूडेंट साइकिल कर रहा है from home to a shop taking how many minutes? 10 minutes. Okay. The student then spends 5 minutes in the shop. अच्छा जी, 5 minutes के लिए स्टूडेंट की वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो या रेस्ट पे है, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग दोस 5 minutes in the shop. Before cycling home downhill at twice the initial speed. Okay, downhill आप travel कर रहे हो at twice the initial speed. Okay. The right of the bat, option A and B will get cancelled out. Why? हाँ जी. Why will option A and B get cancelled out? बेटा देखो, ऑप्शन ए और बी में क्या हो रहा है? डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है. वन पे आने के बाद डिस्टेंस क्या कर रहा है? जीरो पे जा रहा है. वन पे आने के बाद डिस्टेंस क्या कर रहा है? जीरो पे जा रहा है. दिस इज नॉट पॉसिबल. डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता आफ्टर अचीविंग अ पॉजिटिव वैल्यू. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस. ए और बी ऑप्शन वैसे ही कैंसिल आउट हो गए. लेट्स सी सी एंड डी. नाउ इन ऑप्शन सी देयर इज अ प्रॉब्लम. आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो इनिशियली. दैट्स अ प्रॉब्लम. इनिशियली यू हैड टू ट्रैवल फॉर 10 मिनट्स. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ओनली डी इज योर ऑप्शन. आप 10 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हो, देन यू कम एट रेस्ट, देन यू मूव डाउन. D is your answer. Distance never decreases after achieving a positive value. या लेट सपोज आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बाद क्या डिस्टेंस गिरता है कभी? नहीं 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 नहीं, नेवर नेवर एवर. ठीक है. अच्छा, लेट्स सी दिस. अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी is 0. The height is 12, s is 12. Air resistance is negligible, that means acceleration is 9.81 ms minus 2. You have to calculate the time to reach the ground. So let's write all the quantities. U आपका 0 है, s आपका 12 meters है बेटे, acceleration आपकी 9.81, ms minus 2 है. You have to calculate the time. How will you do that? S is equals to ut plus half a t square. This gets cancelled out, becomes 0. S क्या है? 12 is equal to half into 9.81 into time का square. Time comes out to be what? 12 into 2 divided by 9.81 taken under root. क्या आंसर आता है? 12 into 2 divided by 9.81, और आंसर का आप अंडर रूट ले लो. This comes out to be, time comes out to be 1.56 seconds. That is roughly equal to 1.6 seconds. C is your answer. 6 का आंसर क्या आ गया भाई? C आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. Which word equation is not correct? First वाली ही देख लो. Force is equals to what? Change in momentum divided by change in time. Yeah, rate of change of momentum. A is incorrect. Okay, students. So let's see question number 8. A skydiver is falling vertically with terminal velocity when their parachute opens fully. Okay. So a skydiver is falling vertically with terminal velocity when their parachute opens fully. Which statement describes the motion of the skydiver for the first few seconds after the parachute opens fully? अच्छा जी, आपने motion of the skydiver बताना है. You have to tell the motion of the skydiver after the first few seconds when the parachute opens. What will you say? Beta, let's suppose this is the person. This is the person or the skydiver with the parachute. As the parachute opens, what will happen? The upward force of air resistance will become greater than the downward force of what? The upward force of air resistance will become greater than the downward force of weight. Air resistance की force will be greater than the downward force of weight. Hence, what will happen? If your air resistance or the top force becomes greater as the parachute opens, what will happen? Your speed will decrease. Why? Because the air resistance becomes much greater as the parachute opens. So both the options of increasing speed will get cancelled out. Your speed will decrease. Why? Because as the parachute opens, your air resistance gets much larger than the weight. Hence, your speed
decreases because the upward force or the air resistance force increases. Okay. Now you have to tell whether you will be falling with non-uniform acceleration or uniform acceleration. Let's draw a scenario for that. Let's say currently you are at position 1. Let's say this is the parachute test. Let's say currently the air resistance is 10 Newton. And let's say currently the weight is 1 Newton. बेटा कह देते हैं weight 1 Newton है, air resistance 10 Newton है. What will be a resultant force? 10 minus 1, that is 9 Newton. Now, if the air resistance is greater than the weight, your velocity will decrease. What will happen at position B? Your velocity has decreased. अब आपको पता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर रेजिस्टेंस. अगर वेलोसिटी गिरेगी बेटा, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी गिर जाएगी. व्हाट विल हैपन नाउ? लेट्स से दिस इज द पर्सन विद द पैराशूट. What will happen? Now the air resistance की force will reduce from 10 to a value of what? Air resistance की force will now reduce from 10 to a value of 8 Newton. Just an example, you can say 9 as well, but the thing is air resistance decreases. The weight remains same. What will be your resultant force now? 8 minus 1, that is 7 Newton. बच्चों, can you realize resultant force आपकी decrease हो गई है? Your resultant force has decreased. And you know resultant force is equals to ma. अगर resultant force decrease हो रही है, acceleration will also decrease. That means which type of acceleration is happening? Non-uniform. Acceleration is decreasing or acceleration is changing. It is not remaining constant. That's why your speed is decreasing with a non-uniform acceleration. Is this clear to everyone? बेटा हो क्या रहा है, जैसे ही आपने पैराशूट खोला एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये स्पीड डिक्रीज होगी. इंक्रीज वाले ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर दो. अब जब स्पीड डिक्रीज हो रही है बेटा, तो आपकी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी कंसिक्वेंटली डिक्रीज होगी. 10 न्यूटन से 8 न्यूटन हो गई. एयर रेजिस्टेंस की फोर्स डिक्रीज होगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस. As the resultant force decreases, acceleration decreases. You have non-uniform acceleration with decreasing speed. B is your answer. Let's further move ahead. Okay, so let's see this question, bacho. Two gliders are traveling towards each other on a horizontal air track. The glider P has a mass of this and it's moving with a constant velocity of this. Okay. Glider Q has a mass of this and is moving with a velocity of this. Perfect. The gliders have a perfectly elastic collision. Beta, perfectly elastic collision में क्या होता है? The speed of approach is equals to the speed of separation. What is the speed with which both particles are approaching each other? Can you realize glider P is moving towards the right with the value of 1.2. Glider Q is moving towards the left with a value of 1.8. Both the speeds are in opposite direction. If the speeds are in the opposite direction, how do you calculate the speed of approach? 1.8 plus 1.2. The speed of approach comes out to be 3 meters per second. Okay. What are the speeds of two gliders after the collision? Okay, we have to calculate the speed of the two gliders after the collision. Okay. Now, if you have to calculate the speed of the gliders after the collision, you know that the speed of separation must be equal to 3 meters per second. Let's see if we have any option जिसमें speed of separation 3 meters per second के equal आ रहा है. Let's see option A. Option A में you have the speed of glider P 1.2. You don't know the direction. And Q has a speed of 0.6. You don't know the direction. ठीक है? ये separation का scenario, you don't know the direction. Let's assume both options.
लेट्स अज्यूम 1.2 की स्पीड लेफ्ट पे जा रही है, 0.6 की स्पीड राइट पे जा रही है, बोथ द स्पीड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सेपरेशन? 1.2 plus 0.6, 1.8. Still not the correct answer of 3. Now let's assume that both the speeds are in the same direction. P is moving with the 1.2, Q is moving with the speed of 0.6. This option will also be incorrect. Why? बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता. Why? Because can you realize Q is moving forward with a lesser speed? Q की स्पीड क्या है? 0.6. बेटा अगर फॉरवर्ड पार्टिकल लोअर स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या होगा? पी वापस क्यू से टकरा जाएगा. सेपरेशन इज नॉट हैपनिंग. सो ऑप्शन ए किसी भी तरह नहीं हो सकता. आइदर द स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन. ऑप्शन ए नहीं हो सकता. लेट्स कट दैट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन ए को अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे रख देते हैं. ऑप्शन ए किसी सूरत में नहीं हो सकता. आइदर इफ द स्पीड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और इन द सेम डायरेक्शन. लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन बी. Let's say this is P traveling towards the left with a velocity of 2. Let's say this is Q traveling towards the right with a velocity of 1.4. Currently मैंने opposite directions में रखी है velocities. Can you calculate the speed of separation here? 2 plus 1.4. Whenever things are acting in the opposite direction, you add up the speeds or velocities. तो ये तो नहीं चाहिए हमें, 3 चाहिए भाई. ओके, अब चलो सेम डायरेक्शन में रख के देख लेते हैं. लेट्स से दिस इज 2, let's say this is 1.4. अगेन दिस सिनेरियो इज इनवैलिड. बेटा हमेशा जब भी आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, पीछे वाले की ज्यादा होगी, सेपरेशन तो नहीं होगी, वापस से कोलाइड कर जाएंगे. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ए और बी हमने कैंसिल आउट कर दिए. ठीक है, अब ऑप्शन सी पे आते हैं. कैन आई मूव दिस टू द राइट साइड? बच्चों स्क्रीनशॉट लेना हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करके वीडियो पे ले लेना. ऑप्शन सी को रियलाइज करते हैं. Let's say this is your P moving towards the left with a velocity of 2.8. This is Q moving towards the right with a velocity of 0.2. Realize कर सकते हो दोनों velocities opposite direction में. What will be your speed of separation? Add both of them. 2.8 plus 0.2, that is 3 meters per second. Speed of separation 3 आ गई. C is your answer. Let's further move ahead. Which statement about a couple is correct? Which statement about a couple is correct? It produces rotation only. B is your answer. Couples हमेशा rotation create करते हैं. This is not the couple that you are thinking. This is the couple of forces. Okay. Okay, जी. Let's further move ahead. Okay, let's see this. A picture frame hangs from a string. The string is supported by a pin. Okay. The frame is in equilibrium. Which diagram shows the vector triangle? बेटा वेक्टर ट्रायंगल में मैंने क्या बताया है? All the three vectors are connected in such a way कि हेड टेल से, टेल फिर हेड से, फिर हेड टेल से, फिर टेल हेड से. हेड टेल हेड टेल हेड टेल आपस में कनेक्टेड होते हैं. ऑल थ्री वेक्टर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस. परफेक्ट. ठीक है, जो आपका वेक्टर ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है बेटा? आपका हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह से तीनों वेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं. नाउ इफ यू सी ऑप्शन ए, यहाँ पे तो हेड और हेड कोलाइड कर रहे हैं. नॉट माय डिजायर्ड ऑप्शन. इफ यू ऑप्शन सी, इफ यू सी ऑप्शन सी, यहाँ पे भी हेड और हेड कोलाइड कर रहे हैं. नॉट द वेक्टर ट्रायंगल दैट वी नीड. ऑप्शन बी और सी में देखो, इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ. या दिस कुड बी अ वेक्टर ट्रायंगल. लेट्स सी ऑप्शन डी एज वेल. इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ, इसका हेड इसकी टेल के साथ. दिस इज ऑल्सो अ गुड वेक्टर ट्रायंगल. तो आइदर आपका आंसर बी होगा या डी होगा. नाउ वेक्टर ट्रायंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फोर्सेस को. वेक्टर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द फोर्सेस. बेटा कैन यू रियलाइज फ्रेम का वेट कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड. In option B, the weight arrow is upward. So option B will also get cancelled out. D is your answer. Easy peasy lemon squeezy. आगे बढ़ते हैं. A solid metal cuboid of density 270 has a length of 1 meter, 2 meter, 4 meter. Okay. The cuboid is placed on horizontal surface so that it rests on any one of its six faces. Okay.
What is the largest pressure? You have to calculate the maximum pressure or the largest pressure that the cuboid can exist on the surface due to the weight on one of its six surfaces. अच्छा. First of all, are you provided with density? Yep. 2700. Volume पता है? Yes. Volume किस तरह निकालोगे? Length into breadth into height. Length क्या है? 1. Breadth क्या है? 2. Height क्या है? 4. What does your volume comes out to be? 8 meter cube. Can you calculate the mass बच्चों? Mass निकाल सकते हो? Mass is equals to density into volume. Density की वैल्यू क्या है? 2700. Volume क्या है? 8. What does your mass comes out to be? हाँ, I think we have inputted everything correctly. 2700 multiplied by 8. Mass की वैल्यू क्या आ गई? 21600 kg. This is the value of mass. Perfect. If you have the value of mass, can you calculate the weight now? Yep, weight is equals to mg. Mass क्या है? 21600 into 9.81. What will your value of weight come out to be? हाँ जी, 9.81. Value of weight क्या आ गई? Value of weight comes out to be 211,896 Newton. Now, what do you have to calculate? You have to calculate the maximum pressure or the largest pressure. Pressure maximum is equals to force over area. बेटा, कैन यू रियलाइज आपकी फोर्स या आपका वेट तो कांस्टेंट रहेगा. योर फोर्स और योर वेट विल रिमेन कांस्टेंट. इफ यू वांट द मैक्सिमम प्रेशर यू मस्ट टेक द मिनिमम एरिया अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी. देखो, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ फोर्स गेट्स कांस्टेंट. If you want the maximum pressure, you must take the minimum area of the face. अब किस फेस का मिनिमम एरिया होगा? इफ यू रियलाइज दिस वन, द वन विच हैज द स्मॉलेस्ट लेंथ. तो स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी है? 1 and 2. इस फेस का एरिया मिनिमम होगा या स्मॉलेस्ट होगा? व्हाट विल बी एरिया मिनिमम? 1 into 2, that is 2 meters square. Perfect. Can you calculate the maximum pressure? निकालो maximum pressure क्या आता है भाई? Maximum pressure is equals to force over area minimum. Force की वैल्यू क्या है? 211,896. Area minimum is 2. Can you calculate this answer? This comes out to be 105,948 pascals. This is equals to what? 110 किलो pascals roughly. इसको आप 110 किलो pascals पे राउंड ऑफ कर सकते हो. Your answer for 12 comes out to be D. Let's further move ahead. Okay. A cylindrical iceberg of height h. सही है, एक cylindrical iceberg है जिसकी height capital H है. It floats in water. Floats का मतलब क्या है? Up force is equals to the down force. The top of the iceberg is at a height h above the surface of water. The density of ice is rho I. The density of sea water is rho W. Okay. You have to calculate the height h of the iceberg above the seawater. You have to calculate this small h. How will you do that? First of all, you will say the weight of this iceberg is equals to what? Is equals to the upward upthrust. तो आपको पता है वेट किसके इक्वल हो जाएगा? अपथ्रस्ट के इक्वल. बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? डू यू रिमेम्बर वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, ये मास किस तरह इससे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द मास ऑफ द आइसबर्ग? very easy. Density is equals to what? Mass over volume. If you take the density of the iceberg, multiply it by the volume of the iceberg, you will get the mass of the iceberg. Do you have the density of ice? Yes. How will you calculate the volume of the iceberg? The cross-sectional area of the iceberg, that is this thing. The cross-sectional area of the iceberg multiplied by the total height, that is capital H, multiplied by G.
is equals to upthrust. What is the fluid that we are in? सी वाटर. बेटा अपथरस में जो आप डेंसिटी लेते हो वो हमेशा किस चीज की होती है? जिस फ्लूइड में आप प्रेजेंट हो, विच फ्लूइड आर वी प्रेजेंट इन? वाटर. So density of water G. How will you calculate the volume of the object immersed? ये देखो बेटा अपथरस में ये जो V नॉट लिखा होता है, अपथरस में ये जो V नॉट लिखा होता है, that is the volume of object immersed in water. वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड या इमर्स्ड इन वाटर होता है वी नॉट. कैन यू कैलकुलेट वी नॉट? यप, वेरी इजीली. व्हाट इज वी नॉट? बेटा वी नॉट क्या है? ये येलो हाईलाइटेड चीज. द वॉल्यूम दैट इज इमर्स्ड इनसाइड सी वाटर या फिर लिक्विड. दिस इज योर वी नॉट. हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वी नॉट? एरिया इनटू द हाइट दैट इज इमर्स्ड. ये हाइट कैसे निकालोगे बेटा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. कोई चीज कैंसिल हो रही है बेटा? जी एंड जी कैंसिल आउट. एरिया एरिया कैंसिल आउट. व्हाट इज रिमेनिंग? डेंसिटी ऑफ आइस into capital H is equals to what? Density of water, capital H minus small h. Now you have to somehow make an equation for this small h. How will you do that? मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे एंड डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे. Density of ice into capital H is equals to density of water capital H minus density of water small h. Take this to the other side. Density of water small h, density of water capital H minus density of ice small h. Okay, you have to calculate your small h. How will you do that? Any ideas? Geniuses. We will divide this density of water ऑन द राइट हैंड साइड. और ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया बेटा? कुछ लोगों की मैथ्स कमजोर होती है, चलो मैं वापस बता देता हूँ. ऊपर वाली इक्वेशन में मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया हूँ, इसको राइट साइड पे लेके आ गया हूँ. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल वी डू? स्मॉल h is equals to the density of water capital H minus density of ice capital H divided by the density of water, density of water. Is there anything that is getting cancelled out? Cancel, cancel. So small h is equals to capital H minus density of ice, density of water, capital H. Capital H को कॉमन ले लें? Yes, कॉमन ले लेते हैं. 1 minus density of ice divided by density of water is equals to small h. Any answers like that? A is your answer. This was actually a lengthy question. Okay. In which situation is work is done on an object? अच्छा, किस situation में work done हो रहा है on an object? The object slides with constant velocity. There is no change in kinetic energy. And since you are on a horizontal surface, the change in gravitational potential energy is also zero. There is no work done happening. Let's see option B. A person holds the object at arm's length at a fixed height. Again, there is no change in kinetic energy. No change in gravitational potential energy. Work done नहीं हो रहा. A भी cancel out, B भी cancel out. C को देखो. A person pushes a object up a frictionless ramp. Height gain हो रही है. Gravitational potential energy gain हो रही है. You are gaining gravitational potential energy. मतलब work done हो रहा है. C is your answer. Let's further move ahead. An electric motor operates a lift with an output power of 20 kilowatts. Output power beta क्या हो गई? 20 kilowatts. Okay. The lift and passengers have a combined mass of this. Okay. The motor raises the lift at a constant speed through a distance of 20 meter. How long does it take? Okay. So what is the formula of power? Power output is equals to energy output divided by time. Power output क्या है? 20 into 10 raised to the power of 3. Energy output क्या है? mgh. That is the gravitational potential energy divided by time. Okay. Do you know the m? 1500. G की value क्या है? 9.81. Height क्या है? 20. Can you calculate this small little time? Time निकाल सकते हो जी? बिल्कुल.
You will say 20 into 10 raised to the power of 3 is equals to 1500 into 9.81 into the height, that is 20, divided by time. What will your value of time come out to be? Time is equals to 1500 into 9.81 into 20 divided by 20 into 10 raised to the power of 3. Can you guys calculate the time? Please do so with the calculator. एएस लेवल में कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा. 14.7 seconds, that is roughly equal to 15 seconds as your answer. B is your answer here. 15 का answer is what? B. आगे बढ़ते हैं चलो. In which situation is there least amount of energy transferred? अच्छा, a student and a motorcycle of total mass 80 kg come to rest from a speed of 2 meters per second. Kinetic energy निकाल लो इसकी. For part A, calculate the kinetic energy 1 upon 2 into mass into velocity का square. Cancel, cancel. This becomes 160 joules. ठीक है, B करते हैं. A student of 50 kg falls a vertical distance of 2 meters. Can you calculate the gravitational potential energy? 50 into 9.81 into 2. निकालो जरा क्या आता है. 50 into 9.81 into 2. This comes out to be 981 joules. Okay. C देखो, a car pushes with a horizontal force of 70 Newton for a horizontal distance of 2. Can you calculate the work done here? Yes, force that is 70 into 2, that is 140 joules. Perfect. A student switches on a lamp of power 70 volts for 20 seconds. Can you calculate the energy here? Power into time. ठीक है, 70 into 20. This is 1400 joules. सबसे कम एनर्जी, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ है? इन पार्ट सी. सी इज योर आंसर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है भाई? एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. बी इज योर आंसर. स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है? एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. बी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. A spring of unstretched length 0.1 meter is suspended vertically from a support. अच्छा जी, आपकी unstretched length क्या है? 0.1 meter. A weight of 2 Newton is attached to the bottom of the spring and its length increases to 0.15 meters. अच्छा बेटा, थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं. आपकी इनिशियल लेंथ थी 0.1. आपने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की. लेंथ किस पे इंक्रीज हो गई? 0.15. What is your extension? 0.15 minus 0.1, that comes out to be 0.05 meters. Force क्या है बेटा? 2 Newton. Can you calculate the spring constant? Yes. F is equals to K. Force 2 है, K यहाँ पे आ जाएगा. Extension is 0.05. Can you calculate the value of K? Yes. 2 divided by 0.05. What does your answer comes out to be? 2 divided by 0.05. This comes out to be 40 Newton meter. This is your value of K or spring constant. Simple. अच्छा, आप क्या लिखा हुआ है आगे देखो जरा. फर्दर मोर सी क्या लिखा हुआ है बेटा? आगे देखो क्या लिखा हुआ है. Okay, so now an additional weight of 4 Newton is applied to the bottom of the spring. Initially आप 2 Newton लगा रहे थे, अब आपने 4 Newton add कर दी. What does your now force become? What does your force become after adding 4 Newton? 6 Newton. Can you calculate the new extension? Yes. F2 is equals to KE2. फोर्स क्या है? 6. K हमें पता है 40 है भाई. 40 लिख दो यहाँ पे. What does your extension 2 comes out to be? 6 divided by 40. Extension 2 किसके इक्वल आ जाएगी भाई? 6 divided by 40. Extension 2 comes out to be 0.15 meters. Extension comes out to be 0.15. Simple. अच्छा, क्या लिखा हुआ है? हाउ मच एक्स्ट्रा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एक्स्ट्रा का मतलब क्या है यहाँ पे? एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी या एडिशनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ड्यू टू द एडिशन ऑफ द 4 न्यूटन वेट. अच्छा जी, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर हो रही है या व्हाट इज द एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी व्हेन यू अप्लाई अ 4 न्यूटन वेट? सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी? Do you remember the formula of additional strain energy?
यस और नो? एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हुआ करता था 1/2 k into the final extension square minus the initial extension square. What is the value of k? 40. What is the final extension? 0.15 का whole square. What is your initial extension, beta? 0.05. 0.05 whole square. Can you calculate the additional strain energy, bachi? Yes, 20 into 0.15 whole square minus 0.05 whole square. What does your additional strain energy comes out to be? 0.4 joules. हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना. एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 k E2 square minus E1 square. What is your answer? Your answer, beta, comes out to be 0.4 joules. D is your answer. आगे बढ़ते हैं. चलो जी. Let's zoom in a bit. ठीक है. I think इतना zoom बहुत है ना. Two progressive waves meet at a fixed point P. The variation with time of the displacement of each wave at point P is shown on the graph. ठीक है, displacement versus time given. What is the phase difference between two waves at point P? You have to calculate the phase difference between two waves. How will you do that? Now for that, बेटा can you realize ये वाली wave, pink वाली wave, x axis पे कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 0.1. और अगर आप रियलाइज करो ये ग्रीन वाली वेव, ये वाली, ये ग्रीन वाली वेव एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट से पास कर रही है? 0.4 से. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? 0.1 0.4 के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? 0.3 सेकेंड्स का डिस्टेंस हो गया, या 0.3 सेकेंड्स का टाइम डिफरेंस हो गया. नाउ एनालाइज वन मोर थिंग. एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? 0.8 सेकेंड. If one wave is getting completed in 0.8 seconds, इसका मतलब ये है आप 0.8 seconds में 360 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हो. If you are covering 360 डिग्री का एंगल in 0.8 seconds, 0.3 seconds में कितने डिग्री का एंगल कवर करोगे? पुटा x here. 360 into 0.3 divided by 0.6, so divided by 0.8. X comes out to be what? 135 degrees. C is your answer. Let's further move ahead. A microphone is connected to a cathode ray oscilloscope. The diagram shows the waveform on the display of the CRO when the microphone detects a sound. The Y gain is 1 volts per division. अच्छा जी, Y gain setting क्या है? 1 volts per division. The time based setting is 2 milliseconds per division. Okay. You have to calculate the amplitude and frequency of the wave. बेटा Y gain क्या है? 1 volts per division. This is 1. This is 1. This is 1. एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 3. सी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. हाउ विल यू डू दैट? द टाइम बेस्ड सेटिंग इज 2 मिलीसेकंड्स पर डिवीजन. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? कि एक्स एक्सिस पे हर बॉक्स, each box on the x axis represents 2 milliseconds. This is also 2 milliseconds. बेटा टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा? 2 milliseconds plus 2 milliseconds. टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा? 4 milliseconds. कैन यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी? 1 ओवर टाइम पीरियड. 1 divided by 4 into 10 raised to the power of minus 3. What will your frequency come out to be? 1 divided by 4 into 10 raised to the power of minus 3. Your frequency comes out to be 250 hertz. B is your answer. Easy peasy lemon squeezy. कोई इसमें डिफिकल्ट बात हमने नहीं की. चलो let's further move ahead. A progressive longitudinal wave is traveling horizontally from left to right. ठीक है. A graphical representation of the wave at one instant in time is shown. अच्छा जी, ये जो wave है वो एक one instant in time है. मतलब your time is not changing for this wave. Yeah, the time is constant for this wave. Okay. Which row could describe the correct label for x-axis and y-axis for this graph? बेटा देखो ये longitudinal wave है.
लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाई एक्सिस पे हम क्या डिस्प्ले करते थे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चे हम वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया करते थे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस। ए इज योर आंसर। ऑप्शन सी और डी बिल्कुल ही नालायक ऑप्शन है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेव एट ओनली वन इंस्टेंट इन टाइम। टाइम नहीं चेंज हो रहा तो टाइम नहीं आएगा एक्स एक्सिस पे। लेट्स सी दिस। A vehicle is moving with a constant speed of 30. Okay, so this is the speed of vehicle. Let's say Vs. It is moving directly towards the stationary observer. That means the frequency observed will increase. The horn of the vehicle emits a sound of 440 hertz. This is the frequency of sound emitted. The speed of sound is this. Okay. What is the frequency of sound heard by the observer? You have to calculate the frequency of sound heard by the observer. How will you calculate that? Frequency of the sound multiplied by the speed of sound divided by speed of sound minus the speed of source. What is the frequency of sound emitted by the vehicle? 440. What is the speed of the sound? 340. Divided by what? 340 minus the speed of source. That is 30. What does your answer comes out to be? Beta answer क्या आएगा? Let's put it in a calculator. 440. 340 divided by 340 minus 30. The frequency observed comes out to be 483 hertz. That is option D. Chalo ji. Which row describes electromagnetic waves? They are transverse wave and they all travel with the same speeds. D is your answer again. Let's further then move ahead. Okay. A horizontal beam of light is incident normally on a polarizing filter. The incident light is vertically polarized and has an intensity of what? 24. अच्छा जी, ये आपकी incident light की intensity है. The direction of transmission axis is 30 degree to the horizontal. You have to calculate the intensity of light in the transmitted beam. I is equals to I naught cosine square theta. I naught क्या है बेटा? 24 cosine 30 का होल स्क्वायर. कैन यू कैलकुलेट दिस? कोसाइन 30 निकालो, उसको स्क्वायर करो, मल्टीप्लाइड बाय 24 करो. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 18 वोल्ट मीटर माइनस 2. A is your answer. Simple. Okay, let's see this question. A pipe of length 100 centimeter is open at both ends. ठीक है, एक पाइप है 100 सेंटीमीटर का जो ओपन है both ends पे. A loudspeaker is situated at one end of the pipe and can emit sounds of different wavelengths. Okay. Which wavelength can produce a stationary wave in the pipe? अच्छा जी, कौन सी wavelength stationary wave produce कर सकती है in the pipe? First of all, both the ends are open. यहाँ पे भी एंटी नोड होगा, यहाँ पे भी एंटी नोड होगा. Let's try out the fundamental frequency. If both of these are anti-node, the fundamental frequency will be drawn like this. Node in between. From anti-node to anti-node, what will your wavelength be equal to? Half lambda. Half lambda is equals to 100 centimeter. Lambda must be equal to 200 centimeter. Do we have an option like that? Nope. So let's add another loop. Let's add another loop like this. Oh, ठीक है. Can you realize this is a node? This is a node. From anti-node to node, you will have a wavelength of 1 over 4 lambda. From node to node, you will have a wavelength of half lambda. From node to anti-node, you will have a wavelength of 1 over 4 lambda. What is the total wavelength? टोटल वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा? 1/4 लैंडा प्लस हाफ लैंडा प्लस 1/4 लैंडा, दैट इज लैंडा. Lambda comes out to be 100 centimeters. Do we have an option like that? Nope. Let's add another loop. Let's add another loop. Let's keep on adding loops until we get an answer that resembles the question. So that resembles one of the options. So let's add a loop here. Let's add an other loop here. So like this.
This is your node, node, node. This is 1 over 4 lambda. This is half wavelength. This is again half wavelength. And this is 1 over 4 wavelength. What will be your total wavelength now? What will be your total wavelength now? बेटा बताओ जरा. 1 over 4 wavelength plus 1 over 2 wavelength plus 1 over 2 wavelength plus थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दें अगर हम yes plus 1 over 4 wavelength. This is equals to 100 centimeters. What will this turn out to be? 3 over 2 lambda is equals to 100 centimeters. Lambda comes out to be what? 200 divided by 3, that is 66.7. That is also not an option. This is very, very tiring, but let's add another loop. Let's add another loop. Let's add another loop. Let's remove this. Okay. So what we will further do is, अब हम क्या करेंगे बेटा? Let's add another loop. This becomes your first loop, second loop, third loop, and like this. And this is your node. I hope we get the correct answer right now. Node and node. Okay, what will be your wavelengths? This is your 1 over 4 lambda. This is your half lambda. This is your half lambda again. This is your half lambda again. This is your 1 over 4 lambda again. Can you add all of them up? Yes. 1 over 2 lambda plus 1 over 2 lambda plus 1 over 2 lambda plus, I will have to scroll to the right, plus 1 over 4 lambda plus 1 over 4 lambda is equals to 100 centimeter. 2 lambda is equals to 100 centimeter. Lambda किसके equal आ जाएगा 50 centimeter. A is your answer. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. A student makes a sound at point R near a building. A second student standing at point S around the corner of the building hears the sound. The building is a solid structure and there are no structures nearby. Okay. Which effect best explains how the student at point S is able to hear the student at point R? बेटा R जो आवाज निकालेगा वो diffract होगी around this building and then it will reach student S. A is your answer. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. The red light of a single wavelength from a laser is incident on a double slit. A pattern of interference fringes is formed on a flat screen that is displayed parallel to the double slit. Which change increases the separation of interference fringes on the screen? X is equals to lambda d over a. क्या चीज x की वैल्यू को इंक्रीज कर देगी? What will increase the value of x? Decrease the distance from the double slit to the screen. Will decreasing d increase x? No, they are directly proportional. Decrease the separation of slits. Yes, if you decrease the value of a, can you realize x and a are inversely proportional? A decrease करोगे, x की value increase कर जाएगी बेटा. Simple. B is your answer. Let's move on to 28. An electromagnetic wave is incident normally on a diffraction grating. A second order maxima n is equals to 2 is produced by an angle of 30 degrees. Okay. The grating has 5,000 lines per centimeter. You have to calculate wavelength. How will you do that? D sine theta is equals to n lambda. Do you have n? Yep. Do you have theta? Yep. You have to calculate wavelength. First of all, let's calculate D. बेटा पहले तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं. How will we do that? थोड़ा सा यहाँ पे scroll right करते हैं. D is equals to what? 1 over capital N. What is capital N? Number of lines in 1 meter. बेटा 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं? 5,000 लाइंस इन 1 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लाइंस इन 100 सेंटीमीटर? 5,000 into 100. कितनी लाइंस हो गई? 5 0 0 0 0.
Can you calculate the value of D? Yes, 1 divided by 5, 0, 0, 0, 0. Can you calculate the value of D? क्या आती है भाई? If I calculate the value of D, 1 divided by 5, and how many zeros? 1, 2, 3, 1, 2. This comes out to be 2 into 10 raised to the power of minus 6. 2 into 10 raised to the power of minus 6. Okay. Now, what will you do? You will input the value of D. 2 into 10 raised to the power of minus 6. Sine of 30. N क्या आ गया 2. You have to calculate lambda. How will you do that? Lambda wavelength किस तरह निकालेंगे बच्चों? 2 into 10 raised to the power of minus 6 sine of 30 divided by 2. 2, 2 cancel out. What will your wavelength come out to be? 10 raised to the power of minus 6 into sine of 30. Your answer comes out to be what? 5 into 10 raised to the power of minus 7. B is your answer. आपका आंसर क्या आ गया बच्चे? बी. आगे बढ़ते हैं. The resistance of a lamp is 10 ohms. The potential difference across the lamp is 6 volts. How many electrons pass the lamp in 24 hours? Okay. So the resistance of the lamp is this. The voltage is this. Can you calculate the current? V is equals to IR. Voltage क्या है? 6. Current I है. Resistance 10 है. Can you calculate the value of current? 6 divided by 10. That comes out to be 0.6 ampere. Can you calculate the charge which passes in 24 hours? Charge निकाल सकते हो that passes in 24 hours. Charge is equals to current into time. Current क्या है? 0.6. What is the time? 24 hours. 24 into 60 minutes in 1 hour into 60 seconds in 8 minutes. What does your charge comes out to be? Charge क्या आ रहा है? 0.6 into 24 into 3600. This comes out to be what? 51840 coulombs is your charge. अब आपने चार्ज नहीं निकालना. You have to calculate the number of electrons. How will you do that? Very easy. बच्चे बहुत easy है. Now, if one electron carries a charge of 1.6 10 raised to the power of minus 19 coulombs, बेटा 51840 coulombs का charge कितने electrons carry करेंगे? Cross multiply. X comes out to be what? 51840 divided by 1.6 10 raised to the power of minus 19. What does your number of electrons comes out to be? 1.6 10 raised to the power of minus 19. This comes out to be what? 3.24 10 raised to the power of 23. 3.24 into 10 raised to the power of 23. D is your answer. Easy peasy lemon squeezy. आगे बढ़ते हैं जी. चलो. What is equals to 1 volts? Voltage is equals to work done over charge. 1 joule per coulomb. Yeah, B would be your answer. Perfect. Let's further move ahead. The resistance of some electrical components may change with changing conditions. Which components resistance increases? किस component की resistance increase करती है? A filament lamp as the potential difference across it increases. बिल्कुल सही बात है बेटा. एक फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर विल इंक्रीज. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. इज योर आंसर. लेट्स मूव अहेड. Gold is sometimes used to make very small connecting wires in electrical circuits. A particular gold wire has a length of this, cross-sectional area of this, gold has a resistivity of this. Can you calculate the resistance? Resistance is equals to resistivity into length divided by area. Resistivity की क्या value? 2.3 10 raised to the power of minus 8. What is the value of length? 2.5 10 raised to the power of minus 3. What is the value of area? 6.25 10 raised to the power of minus 8. What does your value of resistance comes out to be? हाँ जी, resistance की value क्या आ गई भाई? 2.3 10 raised to the power of minus 8 into 2.5 10 raised to the power of minus 3 divided by 6.25 10 raised to the power of minus 8. What does your answer comes out to be? 9.2 10 raised to the power of minus 4 ohms. C is your answer. Perfect. Okay, a cell of electromotive force EMF, ठीक है, a cell of constant electromotive force and negligible internal resistor is separated into 4 different circuits. ठीक है, is separately connected into 4 different circuits. Okay,
In which circuit is the power dissipated by the lamp stays the same as the variable resistor is adjusted? Okay. बेटा कौन से सर्किट में आपकी पावर सेम रहेगी डिस्पाइट द वेरिएबल रजिस्टर बीइंग एडजस्टेड? देखो, सर्किट ए को एनालाइज करो. लेट्स से दिस इज द ईएमएफ ई ऑफ द बैटरी. ये ईएमएफ ई इस पैरेलल ब्रांच में भी होगा, इस पैरेलल ब्रांच में भी होगा. कैन यू रियलाइज इफ यू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर, लैंप की रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी. व्हाट इज द पावर ऑफ अ लैंप? वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ईएमएफ भी सेम रहेगा, रेजिस्टेंस भी सेम रहेगी. इवन इफ यू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर, EMF across the lamp is same. The voltage, the resistance across the lamp remains constant even though if you change the resistance. A is your answer. A में आपकी power of the lamp will remain same even though your variable resistor की resistance changes. Let's zoom in a bit. The sum of currents into a point in a circuit is equals to the sum of currents out of that point. Which statement is correct? This is Kirchhoff's first law that is based on conservation of charge. A is your answer. A battery of electromotive force 6 volts and negligible internal resistance is connected to 3 resistors. The current in the battery is 0.12 ampere. What is the resistance R? अच्छा जी, हमने resistance R निकालनी है. How will we do that? बहुत 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 easy है. If you first realize this is the 30 ohm resistor. Okay. So you can apply V is equals to IR. Voltage क्या है? We don't know. करंट क्या है 0.12, रेजिस्टेंस क्या है 30. व्हाट डज दिस कम्स आउट टू बी? 0.12 इंटू 30 क्या आ जाता है? 2 into 30, this comes out to be 3.6. 3.6 volts. Okay. 3.6 volts. This resistor has eaten up. The total voltage is 6. What will this branch get? Or what will this parallel combination get for that matter? बेटा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना वोल्टेज आएगा? 6 minus 3.6, that is 2.4 volts. That means इस resistor को भी 2.4 and इस resistor को भी 2.4 volts. Furthermore, can you calculate the current across the 60 ohm resistor? Yep. V is equals to IR. Voltage क्या है 2.4. I हमें नहीं पता, resistance 60 है. 2.4 divided by 60. The current across the first resistor is what? 0.04 ampere. The current across the first resistor is 0.04 ampere. Can you calculate the current across the second resistor? ये capital R के across current निकाल सकते हो? Yes, 0.08 ampere. That is the current across the capital R resistor. The voltage is 2.4 across this resistor. Can you calculate the resistance? Resistance is equals to V over I. 2.4 divided by 0.08. क्या आंसर आएगा? This comes out to be 30 ohms. 35 का आंसर is B. 35 का आंसर is B. Simple. A potentiometer circuit, okay, may be used to determine the unknown electromotive force of a cell. The circuit diagram shown includes a battery of known EMF and negligible internal resistance, a uniform resistance wire XY, and a galvanometer. Which circuit diagram shows a suitable arrangement for determining E? So you have to determine E. Basically ये क्या है? पोटेंशियोमीटर की डायग्राम. ये क्या है बच्चे? पोटेंशियोमीटर की डायग्राम है. ठीक है. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. अब एक की पॉइंट लिखवा रहा हूं जो पोटेंशियोमीटर में हमेशा फॉलो. पोटेंशियोमीटर में बेटा जिस तरह आपके बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह आपके ईएमएफ ई वाले के भी टर्मिनल्स होने चाहिए. जो आपके बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो ही सेकेंडरी सेल के भी टर्मिनल्स होने चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव. ऑप्शन सी में उल्टा है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव. दिस विल नॉट बी योर आंसर. ऑप्शन डी में भी पॉजिटिव नेगेटिव है. दिस पॉजिटिव कोरिस्पॉन्ड्स टू द नेगेटिव एंड द नेगेटिव कोरिस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव. ये नहीं होना चाहिए. In a potentiometer, the terminals of the primary cell or the primary battery should be corresponding to the terminals of the secondary cell or the secondary battery. ठीक है. ऑल क्लियर? ओहो, ये सेकेंडरी की स्पेलिंग मैंने क्या लिख दी. ठीक है.
जो आपके प्राइमरी सेल के टर्मिनल्स हैं वो सेकेंडरी सेल के टर्मिनल्स के साथ अलाइन करने चाहिए. ओके. Also, if you are determining the EMF E, your galvanometer should be in the second branch. आपका galvanometer second branch में होना चाहिए. 36 का आंसर is B. Easy peasy. Limit squeezy. आगे बढ़ते हैं. A uranium atom of charge plus 2. Okay, so you have a uranium atom of charge plus 2 has a nucleon number of 235, proton number of 92. Okay, E is the elementary charge. What is the total number of protons, neutrons and electrons? देखो बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर तो हमें गिवन है. व्हाट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स? द न्यूक्लियन नंबर 235 तो आपको गिवन है. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 235. नाउ सिंस द यूरेनियम एटम हैज अ चार्ज ऑफ प्लस 2, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 लेस देन द प्रोटॉन्स. 92 minus 2, that is 90. 235 plus 90, your answer comes out to be right. 325 is your answer. Okay, आगे देखते हैं. A radioactive nucleus W emits a beta negative particle to form X. Okay, let's say W की composition थी a nucleon number of A, proton number of B. एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट किया तो क्या हो जाएगा? X बन जाएगा. X का मास नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर क्या हो गया? +1. Always remember, whenever beta negative particle is emitted, proton number increases by 1. अब x क्या इमिट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल. ठीक है भाई, x को अल्फा पार्टिकल इमिट करवा दो. ax -4, मास नंबर -4 हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर -2 हो जाएगा. दिस विल बिकम b -1. अच्छा, फॉर दोज हु आर वीक एट मैथ्स, लेट मी डू इट इन अ बिट इलैबोरेटिव मैनर. जब भी आप अल्फा पार्टिकल इमिट करते हो, आपका मास नंबर -4 हो जाता है, a-4, and your proton number decreases by 2. If your mass number decreases by 4, you will say a-4. Proton number decreases by 2, तो क्या लिखोगे? b plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 क्या हो जाता है? -1. And this is known as your nucleus. Why? This is no, sorry. This is known as your nucleus Y. Then nucleus Y emits a beta negative particle. Okay. So if you are emitting a beta negative particle, what will happen? A-4, this becomes Z. And whenever you are emitting a beta negative particle, proton number gets added by 1. Okay. Now, can you realize the proton number on W, proton number on Z is same? That means they are isotopes of each other. Let's see, कोई ऐसा option है? Z is a nucleus of a different element. No, Z is a nucleus of the same element and has a higher nucleon number. No, 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 no. Z का nucleon number कम है, higher नहीं. Z is an element of the same nucleus as W and has a lower nucleon number. D is the answer to 38. न्यूक्लियन नंबर लो क्यों है? क्योंकि आपका न्यूक्लियन नंबर क्या है? a-4. W का क्या था? ओनली a. That's why nucleon number of Z is lower. Which particle is not a lepton? Almost free marks. Neutron is not a lepton. How many types of antiquarks are there? 6 types of antiquarks are there. The last 2 were literally free giveaway marks. So I hope this is clear. If you have any questions, you can ask in the chat further.